Hello, good morning, students. In the earlier lectures, we discussed law of supply. What is law of supply? Other things being equal, a rise in price of the product leads to a rise in the supply of commodity and vice versa. Price rises, supply rises, price falls, supply falls. So there is a direct relationship, there is a positive relationship between supply of a commodity and price of the product. Okay, जैसे price बढ़ेगा supply will also increase, but market price, as every law has its own exceptions, exceptional situation जिसमें प्राइस बढ़ने के बावजूद सप्लाई नहीं बढ़ेगा, ये पॉसिबल हो सकता है. So there are some situations which are considered as exceptions to the law of supply. So that in this video lecture we will discuss exceptions to the law of supply. First, expectation about future changes in the prices. In the last video lecture, in determinant of market supply, we have already discussed this point, that when supplier or producer expect price to rise in future, even at higher price, he will not supply more. To take advantage of increased price, he will withhold the stock. Okay, he will not release his stock in the market. Suppose we are taking example, suppose price of X commodity is rupees 100. The market price of X commodity increased from 100 to 120. So 20% increase. Obviously supply increase होना चाहिए, but the producer or seller expectation of seller that market price of X commodity will be 160 rupees in a very near future, 1 or 2 weeks. So क्या करेगा वो? He will withhold the stock. So price rises, supply fall. That is an exceptional situation. Even though increase in price, supply will fall. Why? Because the producer will withhold the stock. He will not release the stock in the market, okay, in order to take advantages of future changes in price. On the other hand, suppose price of Y is rupees 100. It falls from 100 to 180. क्या होना चाहिए? Supply should fall. But the producer is expecting that in a very near future price of X commodity, Y commodity will fall from rupees 80 to rupees 50. तो क्या करो? Even at lower price, he will supply more. So price fall, supply rise. Yes. That is an exceptional situation. Simple. When seller or producer expect price to rise in future, he will supply less. When producer or seller expect price to fall in future, he will supply more. Okay, that is an exceptional situation. Second, rare articles. There are some rare article, coins, stamps, historical documents, etc. Obviously, supply of such things is very limited. वो कभी-कभी वो दुर्लभ चीजें हैं, वैसे नहीं मिलती. So even at very high price of this product, supply of commodity cannot be increased. कुछ दिन पहले क्या कि भाई टीपू सुल्तान की तलवार किसी ने परचेज की है इतने करोड़ में एक्सेट्रा, अगर उसकी प्राइस भी बढ़ जाए तो क्या होगा? टीपू सुल्तान की 50 तलवार तो नहीं हो सकती. Getting my point? So this, when supply of such commodity is very limited, fixed, whose supply cannot be increased with increase in price. Okay, so that is an exceptional situation. So this is an exception to the law of supply. Next, commodities whose supply fixed in the short period. There are some commodities whose supply is fixed. The supply is relatively inelastic or perfectly inelastic, whose supply cannot be increased in short period of time, whose supply cannot be changed. These are perishable commodities like fruits, milk, vegetables, egg,
fish, etc. वो सप्लाई इज रिलेटिवली फिक्स्ड और रिलेटिवली इनलास्टिक. तो जैसे प्राइस इंक्रीज होगी, थोड़ा बहुत वो सप्लाई इंक्रीज, बट यू कैन नॉट इंक्रीज सप्लाई इन प्रपोर्शन टू इंक्रीज इन प्राइस. ऑन द अदर हैंड वो प्राइस फॉल हो जाएगा, फिर भी आप लोग वो सप्लाई को रिड्यूस नहीं कर सकते, बिकॉज यू कैन नॉट होल्ड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज दीज आर पेरिसेबल कमोडिटी. तो आपने लोगों ने देखा होगा कि जब फार्मर्स को उसके चीजों के प्राइस दाम नहीं मिलते तो वो फेंक देते हैं. हाँ, उस सप्लाई कैन नॉट बी रिड्यूस. वो सीमेंट नहीं है कि कोई प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट नहीं है जो सो आप लोग 5-10 साल तक उसको स्टोर कर सके. The supply of such commodity is fixed, and these are perishable commodities, so the supply cannot be increased in the proportion with change with the price, or price बढ़ेगा तो अचानक सप्लाई बढ़ जाएगा, प्राइस घटेगा तो सप्लाई घट जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है. So this is also an exceptional to the law of supply. Next, supply of labor and savings we will discuss. Supply of law of supply has also exception in the reward of factors of production. ऐसा कह सकते हैं. There are 4 factors of land, labor, capital and investment. Rent, wages, interest and profit. We have studied. There are 4 factors of production: land, labor, capital and entrepreneur. Land, rent is a reward of land. Wages are the reward of labor. Interest is the reward of कैपिटल एंड प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ एंटरप्रेन्योर. उसको ये भी कह सकते हैं कि वेजिस क्या है, लेबर की प्राइस है, प्राइस ऑफ लेबर, ऑब्वियसली लेबर की प्राइस है, राइट, प्राइस भी है. सैलरी फॉर मी इज माई रिवॉर्ड, बट सैलरी फॉर द कॉलेज इज प्राइस टू गेट माई सर्विस. मेरे लिए सैलरी क्या है, मेरा काम का रिवॉर्ड है, मगर कॉलेज के लिए वो क्या है, प्राइस है. कॉलेज को अगर मेरी सर्विस चाहिए तो कॉलेज को एक प्राइस पे करनी पड़ेगी, सैलरी. कैन यू मैम? सो दीज आर नॉट ओनली रिवॉर्ड्स, दीज आर रिवॉर्ड्स ऑन द वन हैंड, ऑन द अदर हैंड दे आर ऑल्सो प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ओके, सो व्हेन प्राइस ऑफ लेबर इंक्रीज, वेजेस इंक्रीज, ऑब्वियसली सप्लाई ऑफ लेबर इंक्रीज, but up to certain proportion. Okay, अगर किसी लेबरर को ये कहा जाए कि आपकी सैलरी इतनी बढ़ जाएगी तो आप ज्यादा ओवर टाइम कर लें, सो ही विल वर्क मोर आवर्स टू गेट एक्स्ट्रा वेजेस और एक्सेट्रा, करेंगे. मगर अप टू सर्टन पॉइंट यू कैन इंक्रीज द सप्लाई ऑफ लेबर, बट आफ्टर सम टाइम यू कैन नॉट इंक्रीज द सप्लाई ऑफ लेबर with even though there is increase in price. आप कितना भी सैलरी बढ़ाओ, कोई आदमी 24 आवर्स काम नहीं करेगा और आप सप्लाई ऑफ लेबर को इतना प्रोपोर्शन में बढ़ा नहीं सकते. Getting my point? On the other hand, when supply prices of labor falls, लेबर अगर प्राइसेस फॉल, लेबर वेजेस कम हो जाए तो इतना जल्दी वो सप्लाई रिड्यूस नहीं हो सकता. On the contrary, it will be happen that supply of labor can be increased. Why? Because now producer can employ more number of people. Okay, why? Because wages fall हो गया, wages fall हो गया है, इसलिए producer can employ more laborers. So with fall in prices of labor, supply of labor may be increased. Okay, so this is also an exceptional situation. In short, supply of labor can be increased with increase in the price of labor, that is wages, but up to certain point. उसके बाद नहीं होगा, उसके बाद people will prefer leisure, उसको आराम चाहिए, उसको उसकी भी social life है. So it cannot increase indefinitely, कि आप increase infinitely increase नहीं कर सकते. Getting me? Next, savings. Same law is apply over here, that इंटरेस्ट की प्राइस क्या है, सेविंग्स, कैपिटल की प्राइस क्या है, इंटरेस्ट. सेविंग विथ राइज इन इंक्रीज इन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट जब इंक्रीज होगा क्या होगा, इट विल अट्रैक्ट पीपल टू सेव मोर, कि अभी ज्यादा इंटरेस्ट हो रहा है
7% से 10% हो गया, so people is getting more interest, so people will save more, but up to certain point कहाँ तक सेविंग करेंगे. But after a particular point, even at very high rate of interest, you cannot attract more savings. क्योंकि इनकम के दो पार्ट है, y इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स. इतना सेविंग्स करेंगे तो कंजम्पशन के लिए क्या बचेगा. ओके, सो अप टू सर्टन पॉइंट यू कैन अट्रैक्ट सेविंग्स, you can increase savings by giving more prices of capital, that is interest. But also you cannot increase infinitely, वो आप increase नहीं कर सकते. Up to certain point savings will fall. Okay, so this is also the exceptional situation in the law of supply, savings too. So I am repeating that there are 5 exception to the law of supply. First, expectation about future changes in price. When producer will expect price to rise in future, market price will supply less. When producer expect price to fall in future, he will supply less, or he will supply more. When red article or supply is fixed, it cannot be increased with the increase in prices. Same, there are some commodities, essential commodities, perishable commodities, whose supply is fixed in the short period. In the longer run, supply of such commodities can be increased, but in the short run, immediately you cannot increase the supply of such commodity, or you cannot change the supply of such commodities. Supply of labor and savings, these are known as prices of factors of production. उसको ज़्यादा प्राइस मिलेगी तो अप टू सर्टन पॉइंट सप्लाई ऑफ सच थिंग्स कैन बी इंक्रीज, बट अप टू सर्टन पॉइंट, उसके बाद आप इंक्रीज नहीं कर सकते. ओके, आज के लिए इतना रहेगा. थैंक यू वेरी मच.